and this is the story of Hazrat Moses, as the Bible puts it. And this is Moses, and he's looking at a bush. एक bush जलती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो खुद consume नहीं हो रही, लेकिन उसके ऊपर आग लगी है. And he's excited, he's curious, he's appalled, and he starts walking towards it. And he hears the magical voice saying, "Moses, take off your shoes. This is no ordinary land." And he looks around, but he cannot find anyone. So he keeps moving, and once again he hears, "Musa, apne joote utar do, ye aam zameen nahi hai." And he again looks around, cannot see anyone, and keeps marching. And this time he hears, "This is the final call, Moses. Take off your shoes. This is no ordinary land." And this time he looks around and says, "But who are you?" And the God replies, "I am what I am." No other definition. The simplest definition that you come across in scripture is I am what I am. So how do we become that? How do we become that really? Well, which is what it is. It doesn't need any shastras. It doesn't need to drive a great car to say, "Hey, this is who I am." It doesn't need to put on a jacket all the time and say, "Hey, this is who I am." It doesn't need to show up degrees and qualifications and say, "I am what I am." It doesn't need to buy into great events or brands and say, "Hey, I am all of this," because you're nothing of it. How do we arrive at a level where we say, "I am what I am"? And for that, the second story makes a great link. That this is Moses, and he used to have a staff. तो मूसा के हाथ में ऐसा होता था. अल्लाह ने सवाल क्या है मूसा, तुम्हारे हाथ में क्या है? And his answer wasn't a simple one. He wouldn't say तेरे हाथ में ये ऐसा है. The answer was मेरे हाथ में ये ऐसा है जिसको मैं दरख्तों पे मारता हूँ ताकि उसके पत्ते गिरें और मेरे जानवर खा सके, मेरे जानवर कर सके. He was a favorite. He would respond. He'd give long answers. And so God said, "Gira de isko, and I will make miracles happen. Drop the staff, and I will make miracles happen." So it was like, okay, he drops the staff. When he drops it, जब वो ऐसा गिराते हैं तो वो क्या बनता है? क्या बनता है? अज़दार बनता है. इतना बड़ा उसका मुंह, और मूसा डर के भाग रहा है. He's scared of it, and he gets the message. तेरा रब तेरे साथ है. जो हर किसी से डरता है वो खुदा से नहीं डरता, और जो खुदा से डरता है वो किसी से नहीं डरता. डाल अपना हाथ इसके मुंह के अंदर, and he puts his hand in the mouth, and the moment he does that, he turns into the staff again. And all the miracles of his life are attached to this staff. But what did this staff signify? It wasn't just a stick that he was dropping. This staff signified three things. Very interesting. Number one, identity. ये मूसा की शनाख्त थी. आप वर्दी वाले को दूर से देख के बता देते हैं पुलिस वाला है. चरवाहे को दूर से देख के बता सकते हैं कि चरवाहा है. This was a special staff. Number two, ये उनका रोजगार था. बादशाह के घर से निकाले गए थे. That's how he used to make a living. That's how he used to earn. And number three, this was his control. That's how he used to control his labor. That's how he controlled the people around him. So identity, income, and influence. And so God said, "Gira de isko, and I will make miracles happen." तू अपना खौफ गिरा दे कि लोग तुझे किस शनाख्त से जानते हैं. तू अपना ये खौफ गिरा दे कि तू कितना बना रहा है. तू अपना ये कंट्रोल फ्री को ना छोड़ दे. And I will make miracles happen. So either one can chase this, and look at this picture, and look at me while I'm chasing all of this. Who is the master here? अगर मैं इसके पीछे भाग रहा हूं तो हमें से मास्टर कौन हुआ? ये तीन चीजें गुलाम कौन हुआ? मैं. लेकिन मैं तो अशरफ मखलूक हूं. अल्लाह कहता है मैंने तुझे बादशाहों की तरह पैदा किया, बादशाह की तरह उठाऊंगा. सवाल ये क्या तू बादशाहों की तरह जिएगा या नहीं जिएगा? सो मैं तो ये गुलामी करते हुए अच्छा नहीं लगता. तो उसने एक और तरीका दिया. उसने कहा गिरा दे इसको और मैं तुझे इसके पीछे, ये तेरे पीछे भागेगा. You just wait and watch. This is going to come after you. And if you think about it, let's talk about identity. That's what it says. मैं जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ, जिसे चाहता हूँ गिरा देता हूँ. It's not under your control. आप लाख अपने दारों के अंदर शशके बना लें, इज्जत बना लें, असाइनमेंट कर लें. आपकी एक पुरानी तस्वीर आ गई है जो आपने ऐसे फोन करके ली थी, बेबी दिस वन इज फॉर यू. यार कुछ लोग बड़े सीनियर हैं, उन्होंने ये काम नहीं किया होगा, लेकिन यकीनन कुछ ना कुछ और जरूर किया होगा. एंड वेयर वाज द आइडेंटिटी? यू एंड आई हैव सीन दो दुकानें खुली हैं, एक चले जा रही है, दूसरी पे कोई जाने वाला नहीं.
और जिस पे नहीं जा रहे वो बड़ी लाइटें लगा के बैठा है, वो बड़ी सेल लगा के बैठा है. What is this thing? और आपने देखा होगा कुछ लोग तो आपसे कम काबिल हैं, आपसे ज्यादा कमा रहे हैं. Put your hand up if you know what I'm talking about. कम काबिल और आपसे ज्यादा कमा रहे हैं. And keep your hand up if that person you believe is your boss. सारा काम तो हम करते हैं, सारा काम तो हम करते हैं. You know, it is so bad, and all these corporate trainings is the Rona of the bosses of the bosses of the bosses. और ये हायरार्की इदारे की, ये हायरार्की इदारे की. और थोड़ा अरसा तो गुजार लेते हैं, उसके बाद ऊपर देख रहे होते हैं ये कब जाएगा. इतनी तकलीफ आ रही होती है, ये कब जाएगा. इतने लोग बीमारी से मरते हैं, ये कब जाएगा. What a sick mindset. What a sick mindset. And that's what it says. That no matter how much whatever you do, I have written it down for you, and that's what you're getting. Don't worry about it. That's not for you to worry about. तुमसे साथ तेरी काबिशों पर लिया जाएगा, नतायज का नहीं. Just keep doing your job. Just do it really well. Just do it as if your entire being is involved in it. And influencers, so many people trying to create influence. यहाँ पे लोग दरख्त लगाते हैं, नीचे लिखते हैं this tree was planted by. What a sad life. That people would remember me because I planted this tree. मेरा नाम आएगा इवेंट के ऊपर. है? आएगा please, मुझे मिल रहा है awards. You know, I will get it this year. Can you please put my name on it? Influence. And he says, get out of this school and I'm going to make miracles happen. You're going to see miracles happen. There was one man who said about identity कि मेरा काम इतना अजीम है कि मुझे भीख मांगते हुए भी शर्म नहीं आती. My work is so powerful that I don't mind begging in front of everyone. हुकूमत वक्त ने उठा लिया, आप सब कुछ ले लेंगे, सारी सर्विसेज तेरी पर, एम्बुलेंसेज उठा लेंगे, सेंटर बंद करा देंगे. एंड दिस मैन से सब ले लेना, मुझे छोड़ देना, मैं भीख मांग के सब कुछ वापस कमा लूंगा. दिस मैन सेज अबाउट हिज इनकम, दिस मैन, my boss, my mentor, my boss, quite a ridicule in her own right. Shiri Naqvi, जर्मन को लेके गई, लाख यूरो लेकर आया था, करोड़ पाकिस्तानी रुपए बनते हैं. मुलाकात के लिए गए, brilliant meeting, all of it. He asked the German, he said, क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान के अंदर, क्या रिश्ता है. He said, no रिश्ता, I just want to support good work here. He says, thank you very much, but please take the money back. मैं गैर पाकिस्तानियों से इमदाद नहीं लेता. I don't take money from anybody outside. और कौन पैसे देता था? रिक्शे वाला देता था, ठेले वाला देता था, सुजुकी चलाने वाला देता था, ये तो देता ही देता था. इनकम, 11 साल की सस्टेनेबिलिटी क्रिएट होना. एंड इन्फ्लुएंस, व्हाट एन इन्फ्लुएंस दैट ही गेट्स द स्टेट फ्यूनरल. दिस गाय व्हेन ही वाज 18 साल की उम्र में, एक स्ट्रेचर हाथ में, और ख्वाब है कि मैं एक ऐसी एम्बुलेंस सर्विस बनाऊंगा that every 25 kilometers in this country you're going to find one ambulance. He doesn't know how he's going to get there, but he believes he can. He believes he can. And my organization wrote to him and said, come to our conference, we want to recognize you, हम आपको तमगा देना चाहते हैं. He says, तुम क्यों मेरे 2 घंटे ज़ाया करना चाहते हो? ये 2 घंटे मैं किसी की खिदमत में लगा सकता हूँ. I don't want the award, give it to somebody else, but let me do my job. And what beauty, what a legacy, that the day he passes away, that day too, वो लोग जो कि जान कुर्बान करते थे, जब इंतकाल हो गया और सारे सियासतदान जुड़े हुए और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट जुड़ी हुई है, लेकिन इनका इदारा उस दिन भी इस शहर के अंदर काम कर रहा था, एम्बुलेंसेस भगा रहा था, लोगों की खिदमत कर रहा था.